विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से ही हल होगा। इसमें किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने शांति की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि ये भारतीय हथियारों का ही बल था जिसने पाकिस्तान को गोलीबारी रोकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. Siddhant, you had a question on the latest statement issued by the Pakistan Foreign Office. We have seen the statement made by the Pakistani side that a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is.